Namaskaram, members and Patreons. We got a special video for you. It's called The 7 Immortals from Hindu Scriptures by BigBrainco. Hindi video featuring Aadil Roy. No idea what that means. I think this is the first time we watch a video from the YouTube channel BigBrainco. Has 1 million subscribers. Huge. So I hope it is good. Do we know of any immortals? I think Hanuman, is he considered an immortal? Yeah, we know of 2 that I'm aware of. Yeah. Oh, don't spoil it. Okay, 2. So I know of 2. Yeah. Mahabharat. Oh, the one kid. The one that killed everybody at the tent. Yeah. Oh, okay. Ashwathama. Ashwathama, and he is Drona's. It's Drona's son. Yeah. Okay. Pretty sure he's one of them, but I guess we'll find out. Could be wrong. I've been wrong before, and I don't mind being wrong as long as I'm corrected. So let us know. Watch this video with us, and then let us know how accurate it is, and everything else we need to know. Oh, so it doesn't mean that they have to be actually holy, like Hanuman. Yeah. No. Oh, okay. Okay, cool. Pretty sure Ashwathama's is more of a curse than a blessing. Yes. Okay, friends, let's be blown away. Check it out. This information provided by the narrator presenter is for general informational purpose only. All information is in good faith. However, the information presented in this video is solely based on the literature available for public access. Boom. इस वर्स को पढ़ने के बाद आप लोगों को इसमें से कई सारे नाम सुने से लग रहे होंगे, राइट? आज से कई साल पहले इस धरती पे ऐसे लोगों ने कदम रखा है जो इतने साल बाद आज भी हमारे बीच में मौजूद है। ये लोग कहाँ हैं? ये एक मिस्ट्री जरूर है, लेकिन ये लोग हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन सवाल है कि ये लोग कौन हैं और इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो इतने सालों से ये लोग जीते आ रहे हैं, हमारे बीच में है और हमें पता ही नहीं। तो अगर आपको इमोर्टैलिटी एज अ कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने लिटरली भगवान से, देवों से वरदान पाया है अमर होने का, चिरंजीवी होने का। Wow, look at this intro. Cool. अश्वत्थामा। महाभारत की अगर बात हो और अश्वत्थामा का मेंशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा एक चिरंजीवी, एक इमॉर्टल होने के साथ साथ ही वाज आल्सो वन ऑफ द अवतार ऑफ 11 रुद्रास। गुरु द्रोण एक बेटा चाहते थे और इसीलिए वो तपस्या कर रहे थे, जिसके चलते शिवजी ने खुश होकर गुरु द्रोण को वरदान के तौर पे एक बेटा दे दिया और उस बेटे को चिरंजीवी, अमर होने का वरदान दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बच्चे के फोरहेड पे एक ऐसा मणि था, द वेयर ऑफ विच सीज टू हैव एनी फियर फ्रॉम एनी लिविंग बीइंग्स लोअर देन ह्यूमंस एंड वाज इवन सेफ फ्रॉम वेपन्स, फ्रॉम हंगर, फ्रॉम डिजीजेस। लेकिन फिर जब अश्वत्थामा बड़े हुए, ही वेंट ऑन टू बिकम फ्रेंड्स विद दुर्योधन, एंड इस दोस्ती की वजह से और पावर हासिल करने की भूख की वजह से उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की साइड, और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। अपने इमोशंस में बह के अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र वॉर में इतनी गलतियां कर दी कि कृष्ण भगवान ने उन्हें पनिश करने के लिए उनसे उनका माथे का मणि छीन लिया और उन्हें ये श्राप दे दिया कि उनका ये जख्म कभी नहीं भरेगा, उनकी पूरी बॉडी लेप्रेसी का शिकार हो जाएगी। इट विल ऑल्सो बी कवर्ड बाय पस एंड अल्सर्स। कृष्ण भगवान ने ये भी कहा कि अश्वत्थामा अपनी पूरी जिंदगी एक रोगी बन के जिएंगे और कोई उनके मदद के लिए नहीं आएगा, कोई उन्हें फूड या शेल्टर तक प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज एनीबॉडी हु कम्स नियर हिम विल बी डिस्गस्टेड ऑफ हिम। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कुछ साल पहले एक थियरी सामने आई थी जिसमें मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने यह क्लेम किया है कि ही हैज सीन अश्वत्थामा। उस डॉक्टर ने यह कहा कि कुछ साल पहले उसके पास एक पेशेंट आया था जिसके सर पे, जिसके फोरहेड पे एक अनयूजुअल सा वुंड था। उसने ये भी बताया कि इतने सारे ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बाद भी वो जख्म बढ़ नहीं रहा था। तो एक दिन चेकअप करते करते डॉक्टर ने उस पेशेंट को मजाक में पूछ लिया कि आपके माथे का वुंड बढ़ नहीं रहा, क्या आप अश्वत्थामा तो नहीं? बस उसके बाद जो हुआ वो बहुत शॉकिंग था। डॉक्टर ये क्लेम करते हैं कि जैसे ही उन्होंने ये पूछा, वो इंसान, वो पेशेंट वहां से गायब हो गया। इतना ही नहीं, उसके पूरे स्टाफ में से किसी ने बाहर जाते हुए नहीं देखा। और सिर्फ ये एक थियरी नहीं है, अश्वत्थामा को लेके कई सारी थियरीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ होगा? नहीं?
कमेंट्स में बता। लॉर्ड हनुमान, जैसे अश्वत्थामा महाभारत के लेजेंडरी कैरेक्टर्स में से एक है, वैसे ही लॉर्ड हनुमान रामायण के सबसे बड़े वीर हैं। हनुमान जी श्री राम के सच्चे भक्त थे, एंड ही वाज ऑलवेज मेंट टू बी विद। जब रावण सीता मैया को एब्डक्ट करके लंका ले गए थे, उस वक्त श्री राम काफी चिंतित थे, काफी मिजरेबल स्पेस में थे, क्योंकि लंका काफी दूर था और वहां तक का जो फासला था वो काफी कठिन था। लेकिन क्योंकि हनुमान जी उड़ सकते थे, उन्होंने इस लंबे फासले को तय किया और रावण के महल के अंदर अशोक वाटिका में सीता मैया को ढूंढ लिया। अब इसके बाद कई सारी थियरीज है जो ये बताती है कि हनुमान जी को इमोर्टैलिटी कैसे मिली। कुछ स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जैसे ही हनुमान जी ने सीता मैया को खोज लिया, उनसे ये कहा कि वो राम जी के दूत है, उनके साथी है, तो आउट ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड सीता मैया ने उन्हें अमर होने का वरदान। इसके अलावा जब रामायण के सारे कैरेक्टर्स को मोक्ष प्राप्त हुई थी, तो उस समय हनुमान जी ने देवों से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें इस धरती पे तब तक रहने दिया जाए जब तक कि इस धरती पे राम जी का नाम लिया जा रहा है। इसीलिए आज भी अगर कोई सच्चा भक्त राम जी का नाम लेता है तो हनुमान जी वही पाए जाते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जब भी इस धरती पे राम कथा होती है तो उस समय हनुमान जी सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले इंडिविजुअल लॉर्ड होते हैं। एक और थियरी है जो ये कहती है कि रावण को मार गिराने के बाद जब लोगों ने हनुमान जी से ये पूछा कि आप अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स राम प्रूव करें, तो उस समय हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के सबको ये बताया कि उनके मन में, उनके हृदय में राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण बसते हैं। इसके बाद हनुमान जी का ये प्यार देके, ये लॉयल्टी देख के श्री राम ब्लेस्ड हिम विद इमॉर्टैलिटी। महर्षि वेद व्यास। वैसे तो हम हर साल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि वेद व्यास। महाभारत के ऑथर पराशर और सत्यावती के बेटे महर्षि वेद व्यास रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस, विजडम एंड विजन। और अगर आप वेद व्यास इस वर्ड को संस्कृत में ट्रांसलेट करो तो इट मींस द वन हु क्लासिफाइड द वेदास। वेद व्यास जी को विष्णु जी के मेनी ऑफ द अवतार्स में से एक माना जाता है। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि वेद व्यास एक ऐसा टाइटल है जो हर युग में विष्णु अवतार में आए हुए वेदा कंपाइलर को दिया जाता है। आज तक इस धरती पे 28 वेद व्यासास ने जन्म लिया है, एंड महर्षि वेद व्यास इज द 24th वन। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने 3 युगास को एक्सपीरियंस किया है। त्रेता युग जब एंड हो रहा था तब उनका जन्म हुआ, उसके बाद पूरा द्वापर युग उन्होंने विटनेस किया, और उसके बाद कलयुग के कुछ इनिशियल डेज भी विटनेस किए। इसके बाद वेद व्यास जी के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। कई लोगों का ये मानना है कि ही नेवर डाइड, ही कंटिन्यू टू बी इमॉर्टल। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो दुनिया में बुरी चीजें हैं, जो वायलेंस है, इसे देख वेद व्यास ने नॉर्थन इंडिया के किसी छोटे से गाँव में जाके रहना शुरू किया। वो आज भी वही है। विभीषण। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि 500 उंगलियां बराबर नहीं होती, सुनिए। चलिए मैं आपको इस कहावत का रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। रामायण के 2 फेमस भाइयों के बारे में तो आपको पता है, राइट? नहीं, मैं राम और लक्ष्मण के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रावण और विभीषण के बारे में। इन दोनों भाइयों पे जो कहावत मैंने आपको अभी बताई ना, वो एकदम जचती है। जहाँ पे एक भाई पावर, लालच, छल कपट की वजह से बर्बाद हो गया, वही दूसरा भाई अपनी अच्छाई और सच्चाई की वजह से अमर हो गया। विभीषण रावण का छोटा भाई था, और जब रावण सीता मैया को अबडक्ट करके लंका ले आया था तो वो विभीषण थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, इस एक्ट को अनएथिकल बताया था। लेकिन रावण ने उनकी एक बात नहीं सुनी। इवेंचुअली जब विभीषण को ये समझ आया कि एंड में सच्चाई की जीत होने वाली है, तो उन्होंने राम जी की मदद की। उन्होंने राम जी और वानर सेना के साथ मिलकर सीता मैया को रावण के चुंगल से बचाया, एंड ही प्रूव्ड दैट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस टू मेक द राइट डिसीजन। ऐसा कहा जाता है कि जब ये सब खत्म हुआ तब विभीषण को लंका का राजा घोषित किया गया, एंड ही वाज ब्लेस्ड विद इमॉर्टैलिटी, ताकि वो लंका के लोगों को हमेशा गाइड कर सके ऑन लॉयल्टी, राइट कॉन्डक्ट एंड धर्म। परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार है, एंड ही इज आल्सो कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अवतार। परशुराम एक एक्सट्रीमली स्किल्ड वॉरियर माने जाते हैं, उसके साथ साथ सारे अस्त्रास, शास्त्रस और डिवाइन वेपन के मास्टर भी। यही नहीं, वो वन मैन आर्मी के नाम से भी जाने जाते हैं। ही वाज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, एंड ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म दुनिया से सारी बुराई मिटाने के लिए हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि परशुराम इमॉर्टल है और आज भी हमारे धरती पे मौजूद है। लेकिन क्यों? क्योंकि कल्कि पुराण के अकॉर्डिंग जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब विष्णु जी अपने आखिरी अवतार में, कल्कि अवतार में प्रकट होंगे, एंड तब परशुराम विल री-इमर्ज एज अ मार्शल गुरु, एंड एज अ मार्शल गुरु ही विल गाइड द कल्कि अवतार ऑन हाउ टू यूज अस्त्रास, शास्त्रस एंड डिवाइन वेपन्स, जिसके चलते दुनिया की सारी बुराई खत्म हो जाएगी। महाबली, जो बलि के नाम से जाने जाते हैं, एक असुरा किंग है, और हिंदुइज्म में पाए जाने वाले 3 वर्ल्ड्स दैट इज त्रिलोका, उसके राजा भी हैं।
बलि को देखने के बाद इंद्रदेव, who is considered as the king of devas, उनके मन में बलि को लेके एक अनहेल्दी सा एरोगेंस डेवलप हुआ, जिसके चलते वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से ये रिक्वेस्ट की कि वो बलि को सबड्यू करें। विद नो अदर चॉइस विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और वो बलि के पास गए और बलि के पास जाके विष्णु जी ने कहा कि उनके फीट के 4 स्टेप से कवर होने वाले लैंड वो उन्हें दे दें। अब वामन अवतार का साइज देख के बलि ने तुरंत हाँ बोल दिया, लेकिन वो कहता है ना that you should not judge the book by its cover। यहाँ पे वही हुआ। Within the 3 steps विष्णु जी के वामन अवतार ने तीनों वर्ड को कैप्चर कर लिया। उसके बाद बलि had no option but to surrender। लेकिन बलि के दिए हुए वर्ड के मुताबिक अभी एक स्टेप बाकी था, राइट? तो विष्णु जी ने बलि से पूछा कि इस लास्ट स्टेप का क्या किया जाए। इस पर विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस बलि नील डाउन होके उन्होंने अपना सर पेश कर दिया। इसे देख विष्णु जी इतने खुश हुए कि उन्होंने बलि को अंडरवर्ल्ड में तो बैनिश कर दिया, लेकिन उसे एक वरदान भी दे दिया इमॉर्टैलिटी का, मेकिंग हिम अ चिरंजीवी। बाय द वे हर साल एक दिन वो धरती पर आते हैं अपने सब्जेक्ट से मिलने और उस दिन को एज ओनम सेलिब्रेट किया जाता है। कृपाचार्य महाभारत के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है और क्यों ना हो, उन्होंने महाभारत के यंग प्रिंस को वॉरफेयर और उससे रिलेटेड टेक्निक सिखाई थी। अगर मैं आपको कृपाचार्य के बारे में कुछ बैकग्राउंड दूं तो आप लोग ये जान के शॉक हो जाओगे दैट ही वाज नॉट बोर्न फ्रॉम अ ह्यूमन वूम। यस, यू हर्ड मी राइट। इनफैक्ट उनका जन्म हुआ था उनके पिता शरदवान के ग्राउंड पे गिरे हुए सीमेन से, व्हिच मेड हिम अ रियली स्पेशल कैरेक्टर थ्रू आउट द महाभारत। मतलब ऐसी बात नहीं है कि महाभारत में और कोई कैरेक्टर नहीं है जो ह्यूमन वूम की जगह एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीकों से पैदा हुआ है, लेकिन ऐसी क्या बात है जो कृपाचार्य को स्पेशल बनाती है? वेल ये है बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की पार्शियलिटी को पसंद या प्रमोट नहीं करते थे। He was a very dignified person। कई स्टोरीज ऐसी हैं जो ये बताती है कि कृपाचार्य को ये पता था कि कौरवों की तरफ से लगी ये युद्ध की आग पॉइंटलेस है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ड्यूटीज फुलफिल की और महाभारत के इस युद्ध में उन्होंने कौरवों की साइड ली, बिकॉज वो कौरव ही थे जिन्होंने कृपाचार्य को बेसिक नेसेसिटीज से नर्चर किया था, जैसे कि खाना, मकान। तो फिर क्वेश्चन आता है कि कृपाचार्य को इमॉर्टैलिटी मिली कैसे? एक थियरी हमें ये बताती है कि कृपाचार्य का अनबायस्ड और इम्पार्शियल एटीट्यूड देख के कृष्ण भगवान ने उन्हें इमॉर्टैलिटी का वरदान दे दिया था। Okay, well, anyways, we were wrong. We know of more than just the 2. So, yeah, Hanuman, Ashwathama, and then Kripacharya. But I didn't know that he was an immortal. So, No. But Parashuram, we did. We did know that he was, okay, yeah. okay. Yeah. And Sage Vyasa, yeah. also. So we actually knew a few, and we knew of, oh no, yeah, okay, yeah, those. And the brother of Ravan. We kind of know him too. Yeah, we knew of him, but I didn't know he was immortal also. But So yeah, blessings or a curse through your good actions or evil actions, it seems. But it seems like Ashwathama, so I thought he became immortal after, Lord Krishna, ripped the jewel out. That's kind of how I understood it. But no, he was immortal from before. So he was one of the Rudras of Shiva, right? What are the Rudras again? Like a manifestation of Shiva. What? Yeah, or incarnation. Partly. What? Yeah, so then Sage Drona, due to his, devotion of Shiva, got the blessings, it seems, and then, for a son, and then one of the avatars of the 11 Rudras. I'm not sure if I'm understanding that completely correctly, so if anybody wants to clarify that, that's a bit confusing, but anyways, it's very very cool that this is in the scriptures, right? It's all coming from the Hindu scriptures, and that this is happening, right? So it's happening. Yeah, I thought it was cool that Kripacharya was mentioned, because I mean, it could be just my memory, but I know so little. He was not really covered in the BR Chopra Mahabharat. No, right? He had a really background sort of role, but he was there as one of the teachers, right? Yeah, but we don't know. Maybe in another Mahabharat we watch eventually. Yeah. We will learn a little bit more. Mm-hmm. Because he was a prominent figure, otherwise he would not have been there like a lot. Like he was in the picture a lot. Yeah, totally. So the most interesting ones to keep an eye on, I guess, are, I'm pretty sure, Lord Hanuman has more to do on this earth in the future, perhaps, once we really get into the nitty-gritty of the Kali Yuga, and when Lord Kalki appears. And then, of course, Parashuram is going to be, sounds like his teacher and mentor, teaching him the divine weapons, right? Why Hanuman? Sorry, what? I think he's going to be, part of what's to come also, perhaps. Okay. Anyway, that's kind of how I understand it, but maybe I'm wrong. Let me know. Does Lord Hanuman have more of a role to play in the upcoming Kali Yuga? Or is that just it? He's only here,
you know, kind of totally behind the scenes, but just to be present because there's still some Lord Rama devotees and worshippers, and that his presence is here for that. And he's joining every puja. Yeah. Every what? Hanuman puja, every Ram puja? Ram puja. The first one there, and then the last one to leave. I have to start a Lord Ram puja. Yeah, do it. Does Lord Krishna count too as Ram? Yeah, maybe. Well, when you're chanting the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So yeah, Ram is in there, so Lord Hanuman's all over the place then. You know what's so interesting? Just a few hours ago, like 2 hours ago when I was preparing the meal, I thought of the Krishna mantra. I was chanting it, and then I thought Ram, you know, exactly that. It's like, is it actually referring to Lord Ram, the Ram in the Hare Krishna mantra? The way I understand it, yes, but who knows, maybe not. Okay. I think so, because because Lord Krishna, Lord Ram, same being ultimately. Wow. But anyways, should we go through them all? If we could find them. Anyways. So, yeah, the first one was Ashwathama, then Hanuman. Vyasa, yeah. Vyasa, yeah. Yeah, and that was kind of vague, so I'm not too sure why he's immortal, but maybe just to expound the wisdom, right, and the Dharma, and then make sure those, the epics were remembered and told. Oh, and then living in the village in the northern part of India, right? Kind of on the sidelines. Oh, yeah, and then Ravan's brother. So that's really cool that he attained immortality. And then what happened to him, right? So he ruled, I'm guessing, for a very long time and then disappeared as well. But I love how he explained that, right? So even though your brother, you know, is evil, doesn't mean that you have to side with him. You can stand up for truth and righteousness and see that, okay, what you're doing is unethical. I'm gonna depart and side with truth and Dharma and Lord Ram. Yeah, it reminds me of also the Varna brothers, Sugriv and... Oh yeah, Sugriv and Vali. Yeah. Like one is evil, the other one is not, and then he can't just side with the evil. He knows it's evil, so he's siding with the good, and then and has to vanquish the evil. Absolutely. Was there something spoiled in there in regards to the Ramayan? You don't have to say anything, so I'm just going to theorize here a little bit. It was said here in the video, if I'm not completely mistaken, that everybody is going to be liberated at the end of the Ramayan. Which I interpret as everybody on the battlefield is maybe liberated, exactly like the Mahabharat on the battlefield. And then my theory comes into play. Maybe sorry. So they fought in Lanka, right? Yeah. Okay. So if everybody was liberated at the end, which means also all the Rakshas on the battlefield, maybe. Yeah, possible. I took that to mean that those who sided on the good side eventually, like they didn't become liberated instantly, because a lot of them survived, right? But at the end of their life, then they were liberated. Okay, so not like the Mahabharat where literally everybody dies? Yeah. Oh, okay. Yeah, I don't think, I don't think in the Ramayan everybody died in that final battle. I think it was just once they vanquished Ravan, then that was pretty much it. Yeah, and then we got Parashuram, who's, are going to reemerge during the end times once Kalki Avatar appears, and then he's going to train him, teach him the divine weapons. So Vishnu teaches Vishnu, because the Kalki Avatar is Vishnu, right? But we already know that, because Parashuram was already in the Mahabharat as right? Yeah, that's right. He was there and Krishna was there, Yeah. They were both there at the same time, so And also Sage Vyasa is also an incarnation of Vishnu. What? Yeah, he just mentioned that in this video as well. Oh, I didn't... We knew that. We knew that. No, I don't. Okay, well, now you do. Okay, what? Okay, yeah, but how then? Well, not like a full incarnation like Krishna and Ram, but, like partial incarnations. And Parashuram would be a full incarnation, I guess, as well.
But anyways, if anybody knows, let us know What? like how full of an incarnation was sage Vyasa. Oh. But yeah, also Vishnu. Wait, Sage Vyasa was the one that impregnated those 3 princesses, right? Was it Yeah. him? And also The cute one that I liked at the beginning. Yeah, But and also all the compiled way the through. Mahabharat. Yeah. Right? Wait a second. Who did he impregnate, and who's he the father then technically of? Technically Dhritarashtra. Oh yeah, the one who's blind. Dhritarashtra and Oh, the main Pandu characters. and Oh. don't tell me I forgot his name. Yes, but yes, the, but the, I get it. the minister. Yeah. Vidur. Vidur. I got it. Okay. Oh yes. And then the one out of all of these that confuses me the most is the Lord Vishnu's Vamana avatar when he took the steps. I love that story. And then that being became immortal after that. Yeah, exactly. Why exactly? Yeah, I'm not too sure. I didn't understand that either. So Bali, right? But he surrendered right away. Yeah, and then maybe that's why. So he got the blessing of immortality when he stepped on his head. Yeah, so instead of like killing him, he blessed him. Yeah, so the most tragic is literally then Ashwathama. Yeah, and then you got Kripacharya, the last one. So yeah, not born from a human womb. That was surprising. Mm-hmm. Yeah, and then knew that, so he still did his duty. So he was doing his dharma to such an extent that he got blessed from Lord Krishna in the end. What did you think about the modern story about Ashwathama being seen by a doctor? That's very cool. And I did hear about that during the Mahabharat. People left comments about that as well. Okay. That yeah, he's still around and people see him from time to time. And there was a doctor so that story is, yeah, it's pretty well known, right? So, well, who knows, right? People will make stuff up for publicity all the time, but like without knowing and investigating for myself, I don't see any reason why not to believe the doctor, right? Because it is a pretty, incredible thing. And if Ashwathama is still around and he's in that sort of state, then... So it was said that he would seek out help, and when he did, he wouldn't be able to find any help for his suffering. So then why would they set that up and then for him never to do that? So it's kind of foreshadowing that he would seek help from time to time. So obviously maybe it happened. And then, of course, nothing can help him because of his, Krishna's curse. But I don't want to be cursed by Krishna. yeah, and in all honesty, like, who are we? We can't judge anything, especially in regards to that. And we all know he did some horrible things towards the end of the Kurukshetra battle, right? So then, his karma manifested. And then it just shows to show, like, even a Rudra, he has a connection to Shiva. But we all know that, any beings can worship Shiva, even the worst of the worst, and in even partial incarnations, perhaps, can still be on the side of like complete ignorance and negativity and evil. So then Krishna removing the jewel and cursed. Very wild, very confusing, very much out there. And I don't want to speculate, and I'm sure I made some errors with my understanding in this video. So please, anybody want to clarify? Yeah, let us know what we got right, what we got wrong, how accurate was this. And lovely video, by the way. All right, fantastic. Thanks so much for your support and for joining us. Yeah, remember, let us know everything. And we'll see you on the next one. Peace. Peace.